तो देश में त्योहारों के पहले क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है और ताज़ा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में ये आंकड़ा 14.8 खरब रुपए तक पहुंच गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड पहले से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या त्योहार का सीजन इसका कारण है कि सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना? खैर, कारण जो भी हो, आप अकेले नहीं हैं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड से खर्च करना जो है वो भारत में रिकॉर्ड हाई पर है। क्रेडिट कार्ड्स पर 1.48 लाख करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं खाली अगस्त में। और ये अगर हम देखें जुलाई के डेटा से कंपेयर करें इसको, तो जुलाई में जो है ट्रांजैक्शंस 1.45 लाख करोड़ रुपए तक की हुई हैं। तो फिर ये क्यों हो रहा है? अब एक्सपर्ट्स के अनुसार खर्चे में बढ़ोतरी जो है वो ये ट्रेंड दिखा रही है कि जो है खर्चा जो लोग कर रहे हैं वो उधार जो है ज़्यादा ले रहे हैं और खर्चा फिर भी कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार एक और कारण जो है वो ये भी है कि दुकानदार जो हैं वो फिर या फिर रिटेलर्स जो ना हम कहते हैं, रिटेलर्स जो हैं वो त्यौहार से पहले काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, डेटा जो है वो एक और जो है डेटा के साथ आ रहा है कुछ ही दिन पहले, जो ये दिखाता है कि घरेलू बचत में गिरावट जो है वो दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क की कोशिशें जारी हैं और इसरो के चंद्रयान अभियान में 4 सालों तक करीब 1000 वैज्ञानिकों ने काम किया। आपको मिलाते हैं चंद्रयान 3 की उस टीम से जिनका इस प्रोजेक्ट की सफलता में एक बड़ा योगदान है। शिव शक्ति, Veeramutuvel, Kalpana and Shrikant, the mission director. If I can say Shiva Shakti and Nataraj, because the Tandav Nritya is the cosmic dance, and essentially if Chandrayaan 3 was dancing around between Earth and the Moon and then landing, it was through the hands of Shrikant. That's why Shiva Shakti and Nataraj. To the team, one simple question, and I'll hand over the mic one by one to you. Mr. Veeramutuvel, you were involved with Chandrayaan 2 and also with Chandrayaan 3. You scripted history. How did you convert those 20 minutes of terror into 20 minutes of joy? And how many hours a day did you work in these last almost 4 or 5 years or maybe longer from Chandrayaan 2? Chandrayaan 2, as you told, it was a big success except for this power descent phase where this 20 minutes it did not go well. But we initially understood what was the problem and we overcome that problem by identifying the root cause of the issue. This time we knew that the target point, in fact Chandrayaan 2 also we had a similar target point. This target point we have chosen in such a way that it is of scientific interest as well as we have to meet the engineering constraints also. So we built multiple mission paths this time. In fact, in Chandrayaan 2 we had 2 paths, nominal and contingency path. This time we created multiple paths so that anything happens, we wanted a soft landing. That was our target. So we built a path like a real-time retargeting in addition to nominal and contingency path. Sometimes if no altimeter update comes, as you rightly told, there is no GPS in Moon. So we have to have a terrain relative navigation sensors, for which we have altimeters, we have velocity sensors which will give position and velocity information, and we have hazard detection and avoidance. At the end of it, we have to avoid the obstacles to have a soft landing. You embodied Nari Shakti for India and in Chandrayaan 3? Yes or no? I am calling you Shiva and Shakti, so. We did what is required. You did what is required. See, that is the beauty. In ISRO, men and women work shoulder to shoulder. Only talent matters. And one of the most talented people for mission objectives, we have Mr. Shrikant, whom I call the Nataraj, because the Tandav Nritya, or the cosmic dance, is what was really performed. The dance between Earth, Moon, Chandrayaan 3, Vikram, Pragyan,
all of that was rightfully being controlled by Mr. Shrikant. How difficult was the controlling the spacecraft as it was from Sriharikota all the way to Shiva Shakti? Sir, when you say this satellite as a single satellite has three elements, one is propulsion module, one is lander module, one is rover module. All three in each they are unique and have its own requirements and a combined requirements and contradicting each other also. So all these things has to be balanced and the operations has to be carried out pre-planned a priori before liftoff onwards. After injection, the whole composite control has to be done by propulsion module, and propulsion module has its own requirements for meeting the spacecraft objectives. And at the same time, we need to do the lander calibration along with the propulsion module thing. And this phase of composite will continue in earthbound phase as well as in moonbound phase. Then once lander gets separated, lander has its own requirements as is lander standalone. It has to be operated for the mission objective of landing, the 20 minutes. For that, what are major required sensors and our navigation related cameras and our near real-time data download, transmission chain, all these things needs to be tested in that 6 days when lander alone it is up there. So we have before the 20 minutes these were subjected for the actual usage. All these things were pre-calibrated, pre-assessment was carried out in the 6 days. Then during these 20 minutes, all of the systems have behaved or performed as per expectation. We have pinpointed landing, and after landing we had a rover Pragyan which has to come out of the lander and do the mobility over the moon surface. And rover itself is a unique thing because till now we don't have any experience of rover mobility on any celestial body. So that operations itself is a unique thing. So we need to handle it in a semi-autonomous way, near real-time planning. So our whole teams which have worked for propulsion module, lander module and rover, all of us together had only one objective, that every objective for each phase is met full-fledgedly, and rover has also moved 100 meters in that 14 days, which is also one of the important milestones which we have met. So all put together, all these three entities are challenging in each thing. तो दिल्ली के भोगल में जो 25 करोड़ की ज्वेलर के यहां से चोरी हुई थी, उसमें एक नया खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास्तव, इसके अलावा एक शिवा चंद्रवंशी और एक और शख्स शामिल है। इनके पास से काफी सोना भी बरामद हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं इन 3 लोगों के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिलासपुर के आसपास से 3 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक का लोकेश श्रीवास्तव है, दूसरा शिवा चंद्रवंशी है और एक उनका साथी और है। ये 3 लोग अरेस्ट किए हैं। इनके पास से करीब 18 से 20 किलो सोना बरामद हुआ है, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ गहने बरामद हुए हैं माफ करिए। और इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग है जो बीते रविवार को चोरी हुई थी शोरूम के अंदर, जिसमें उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम से करीब 25 करोड़ का सोना कैश गहने लेकर चोर भाग गए थे और छत की ओर आते आए थे। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम की दीवार काट दी थी और वो अंदर दाखिल। इसके बाद वहां से सारा सामान जो लेकर भाग गए थे और दिल्ली सबसे बड़ी चोरी थी। तो इसको लेकर लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने सफलता पाई है। इसमें 3 जो आरोपी हैं, जिसमें लोकेश श्रीवास्तव जो मुख्य आरोपी है, उसका साथी शिवा चंद्रवंशी और तीसरा एक और साथी है। ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है और जो पुलिस है उसके मुताबिक जो लोकेश श्रीवास्तव है वो पहले भी कई चोरी, उसने आंध्र प्रदेश में एक शोरूम में चोरी की थी, छत्तीसगढ़ में वो 7 चोरियां कर चुका है। तो उस पर चोरी के कई सारे मामले दर्ज हुए और छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और इसी बीच अपने गैंग के साथ छुपा हुआ है, तो वहीं पर उसको पकड़ा गया। और दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीमें मौजूद है, लोकल पुलिस जो दिल्ली साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। तो पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता कि उसने दिल्ली में के जंगपुरा में जो शोरूम में चोरी हुई थी
उस मामले में जो 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। बहुत एक बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ। यहाँ पर दिल्ली में जो जंगपुरा इलाके में उमराव ज्वेलर्स है, वहाँ पर 25 करोड़ की जो चोरी हुई थी, उस मामले में 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमाम जानकारी दे देते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर।